Happy wishes to our dear future Indians and respected parents if they will be with this, or others dignitaries, no problem. Question number 2 I am going to deal with Monica, part 1, page number 29. पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत. उत्तराणि लिखत. उत्तराणि लिख. लिखतु लिखतांग लिखन्तु लिख लिखतम लिखत. You all are instructed to write down. What you will be write down? You will be writing down the answer in one word or in one sentence. Yes, one sentence. Purna vakyena means incomplete sentence. Purna vakyena, sampurnena vakyena, uttaram एव लेखितव्यम. कस्य प्रश्नस्य? द्वितीय प्रश्नस्य. प्रश्न: प्रतापः किं श्रुत्वा लज्जां अनुभवति? क्वेश्चन नंबर क. प्रताप क्या सुनकर शर्मिला हो जाता है? व्हाट डिड प्रताप लिसन आफ्टर व्हिच ही फेल्ट असेम्ड? You will be writing कई ही देशस्य उपकार क्रियते. किससे देश का उपकार किया जाता है? किससे? by which things? तृतीया विभक्ति will be used in your answer. कई ही. नेक्स्ट, स्वतंत्रतायाः उपायाः कथं चिन्तनीयाः? how we will be planning for obtaining independence of your country. मान लो कि हमारा देश परतंत्र है, दूसरों के अधीन है, दूसरों के एडमिनिस्ट्रेशन में है. हम चाहते हैं कि हमारा देश का शासन हम ले लेंगे. यदि ऐसा विचार है तो उपाय कथम चिंतनीय, कैसे हमें उपाय को सोचना चाहिए? क्या लड़ाई करके, या अपनी ताकत दिखाकर, या बुद्धि से, या प्रचेष्टा से, प्लानिंग से? यू राइट डाउन द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर घ. प्रतापः किमर्थं पर्याकुलः आसीत्? व्हाई प्रताप वाज वेरी थॉटफुल? प्रताप as a king, he was in problem because he was about to be attacked, or attack was expected for him. That is why he was not staying in his kingdom. He was moving here and there in dense areas where foes cannot come out, will not go there. शत्रु जहाँ नहीं जा सकता वहीं ऐसे जगहों घूम रहा था. कौन? राजा प्रताप. किमर्थं पर्याकुला आसीत्? क्यों पर्याकुलता व्यस्त था? क्या कुछ पैसों की कमी था? क्या सैनिकों की कमी था? या और कुछ देश में प्रॉब्लम था? What are the problems you expect? You have to write down. How you will be getting answer? You read the passage in the examination. From the passage find out. But do not write all the things. Those are not needed. Only focus on the answer. If it is one word, write in one word but in full sentence. Do not write in this way that Toya king khaditam maya jalena saha matra saha pitra saha anujena saha upavishya अत्र तत्र दृष्ट्वा दूरदर्शनं दृष्ट्वा एव किं करोमि स्म? खादामि स्म. हाँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. सपोज वन वर्ड आंसर, त्वं किं खादसि? अहं फलं खादामि. आंसर शुड बी स्ट्रिक्ट. फलं खादेंगे, न जलेन सह फलं या और कुछ. अब ऐसा मत लिखिए. डायरेक्ट आंसर लिखिए. डू नॉट राइट मोर वर्ड्स, दोज विल बी अगेंस्ट योर कोड ऑफ कंडक्ट. दैट विल नॉट बी सपोर्टिव फॉर यू
examiner will not be happy with your answer. Okay? परतंत्रतया श्रृंखला कथं तोड़नीय. जो परतंत्रता है, you are under the control of some kingdom, other administration. How you will be breaking that? How you will coming out from the dependence? Next, किं धन्यम. क्या क्या धन्य है, क्या क्या अच्छा है. Who are praiseworthy or what are praiseworthy? Read the answer, you write. What I am telling, it is not so important. Simply I am giving you the gist. किं धन्यम, क्या क्या अच्छा है, what is good. Okay, please try. I don't want to take more time on this. Thank you.